So good morning students, I hope you all are well. So today I am going to restart the chapter, that is MySQL functions. So student, first we are just going to cover this chapter from beginning, and I would like to introduce this word function. What is actually function have a meaning? स्टूडेंट, हमारे डे टू डे लाइफ में कई सारे फंक्शंस हमारे डे टू डे लाइफ में आते हैं थ्रू आउट द ईयर, लाइक होली, दिवाली, दशहरा. बच्चों, इन सभी फंक्शंस में आपने एक चीज अगर नोटिस करी हो कि जितने भी ये फंक्शंस होते हैं उस दिन कुछ ना कुछ स्पेशल होता है. मीन्स देयर इज एवरी फंक्शन हैज अ special and specific meaning as well as the effect. Okay, let I'm talking about the Holi. बच्चों, जिस दिन होली होती है उस दिन हम लोग कुछ स्पेशल करते हैं जो हम थ्रू आउट द ईयर नहीं करते. एग्जाम्पल, उस दिन हम बिल्कुल मॉर्निंग में उठकर और सबसे पहले पुराने कपड़े पहनते हैं जो कि हम रूटीन बेसिस में नहीं करते, और एक दूसरे को जितना हो सकता है गंदा करते हैं. ओके, रंग लगाते हैं, ठीक है, बहुत सारे कलर्स के साथ होली खेलते हैं जो कि हम रूटीन लाइफ में पर डे किसी के साथ इस तरह से रंग लगाकर किसी को गंदा नहीं करते. सो बच्चों, ये रंग लगाना हमारा एक फेथ है कि हम कलरफुल एक होली मना रहे हैं, ठीक है, और एक दूसरे को हम अपना प्यार जता रहे हैं, ठीक है. तो ये सिंपली होली का जो फंक्शन होता है, उस होली के फंक्शन में हम लोग पुराने से पुराने कपड़े पहनते हैं एज वेल एज कलर्स लगा के एक दूसरे को अपना प्यार जाहिर करते हैं. सो स्टूडेंट्स, उस दिन पर्टिकुलर कुछ स्पेशल होता है. ओके, वो पर्टिकुलर स्पेशल दिवाली वाले दिन नहीं होता. इट्स मीन दिवाली के फंक्शन की जो स्पेसिफिकनेस है वो अलग है, जबकि होली के दिन की स्पेसिफिकनेस है वो अलग है. सो जस्ट लाइक दैट बच्चों, हमारे MySQL के अंदर फंक्शंस आर द स्पेसिफिक वर्ड्स having a specific meaning and it perform an specific operation on the data. Means, what is function? I am just introducing you. Functions. Simply, functions are the predefined words in MySQL by which we perform a specific operation over to the data. Now sir, functions are the predefined words. Means यहाँ पे सबसे important बात है predefined. All functions are बच्चों predefined. Function are the predefined word in MySQL by which we perform specific operation over to the data. Means every function का जब भी हम किसी डेटा पे परफॉर्म करते हैं तो उसका एक स्पेसिफिक इफेक्ट हमें जनरेट होता है. सो नाउ क्वेश्चन अराइज कि सर हम किस टाइप के डेटा पे कौन सा ऑपरेशन करते हैं और कौन सा फंक्शन किस टाइप के डेटा पे इफेक्ट कर सकता है. सो फॉर दैट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि व्हाट आर द कैटेगरी एंड व्हाट आर द टाइप ऑफ फंक्शन अवेलेबल इन द MySQL. सो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ डेटा there are three type of functions, but according to the different type of number of rows on which the function works, there are two type of function. First is scalar function and second is aggregate function. Scalar function are also known as single row function and aggregate function are known as multi-row function. Single row function, scalar function, and aggregate function, multi-row function. Bachcha, as name indicate, scalar function are those function which work on single row data and gives the unique result for every row. And multi-row functions are those functions which work on
multiple records of a table and give the single value as an output. Single value. बच्चों, the biggest difference in both of them is this work on single row, this work on multi-row of a table. It gives unique data for every row, or it gives single row value data output for every row associated with the aggregate function. Okay. Now the scalar group function are again broadly classified according to the type of data which we are passing through the function. Scalar function, single row function are again classified into three categories, that is numeric function, date/time function, and string function. Okay, so we will start from the first scalar function, then we will just learn aggregate function. Okay, so first of all I am going to start scalar function, but before that I would like to tell you what is the writing strategy of a function, that how they are interpreted in the MySQL. Okay, so I am just having an example of a function जो आप लोगों ने पढ़ रखे हैं. लास्ट ईयर भी आप लोगों ने फंक्शंस पढ़े थे 11th स्टैंडर्ड में, बट आई एम रिवाइजिंग ऑल द फंक्शंस अगेन. स्टूडेंट, किसी भी फंक्शन के मेनली दो पार्ट होते हैं. किसी भी फंक्शन के मेनली कितने पार्ट होते हैं? दो. पहला होता है फंक्शन का नेम, और सेकंड होता है उसके आर्ग्यूमेंट्स. Okay, these arguments are also known as parameter value. Means किसी भी फंक्शन के बच्चों दो पार्ट होते हैं, एक तो फंक्शन का नेम वाला पार्ट और दूसरा आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर वैल्यू वाला पार्ट. बच्चों, फंक्शन नेम हमें ये बताता है कि किस टाइप का ऑपरेशन डेटा पे होना है, और आर्ग्यूमेंट्स हमें ये बताते हैं कि वो उस फंक्शन का इफेक्ट कहां पे होना है और किस डेटा पे होना है. और बच्चों, ये जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ये अकॉर्डिंग टू फंक्शन के किस टाइप का फंक्शन है उस हिसाब से ही यहां पर प्लेस होते हैं. लेट आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल. लेट आई एम हैविंग अ फंक्शन दैट इज मोड फंक्शन. Mode is a numeric function which is used to perform a specific operation over to the data. As I told you, this is a numeric kind of function, so it work on the numeric data only. So after mode I need to place the bracket. If I am not placing the bracket after the mode, then the mode will be single word, it become not a function. Bacha, do just remember this most important thing, that every function is a function when it become a parenthesis after their name. फंक्शन नेम के बाद में पेरेंथेसिस आते हैं, आप ऐसे बोलो स्मॉल ब्रैकेट्स आते हैं, जिसके अंदर हम एक पर्टिकुलर डेटा टाइप की वैल्यू यहां पर इंसर्ट करते हैं. तो बच्चों, जैसे मोड एक फंक्शन है जिसके अंदर एज मोड इज अ न्यूमेरिक फंक्शन, सो नाउ आई एम गिविंग द वैल्यू टू इट लाइक 11,3. Okay, so mod 11,3 means mod is the function name and 11,3 is the argument या parameter value on which this function works. अब now in MySQL's library, functionality of mode is already been defined. Already the MySQL compiler knows कि मोड जब भी हम करते हैं तो जिस भी डेटा पे मोड होना होता है तो वो क्या होता है और वो किस तरह से ऑपरेट करता है, वो पहले से MySQL को कंपाइलर को पता है. जैसे ही हम मोड फंक्शन चलाते हैं तो जो पैरामीटर होते हैं उस पैरामीटर के अंदर हमने जो भी वैल्यू आपको इंसर्ट कर रखी है उस इंसर्टेड वैल्यू के ऊपर ये मोड फंक्शन रन कर जाता है. एग्जाम्पल लाइक whenever I am just running this function, so according to the mode operation 3 divides to by the that 11 divided by the 3, so according to the 3 3s are 9, mode gives the remainder of the calculation, then answer will be 2. Okay, like 3 3s are 9 and when 9 is subtracted by 11 we got 2 here, so the answer of this function will be mod 11,3 is 2.
So you have seen that कि ये जो डेटा यहां पर हमने प्लेस किया है, दिस इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर वैल्यू ऑन विच दिस मोड फंक्शन वर्क्स, एंड अकॉर्डिंग टू दैट द आउटपुट ऑफ द रिजल्ट विल बी 2. Okay students, so just like that every function has two part. Every function has a two part. First is function name and the argument and parameter value. Now students, I am going to introduce you the most important part of the. So student, again I am going to start the most important part and the most important examination questions related to function, that is कि students, whenever we are writing a function, as I told you कि a function has two part. One is the function name, second is their parameter or an argument value on which that function works. So students, whenever we are just running a function, we must need to learn three things. First is the function का name, and then which type of parameter value it have, like any numeric function have numeric data, any string function should have string data, and any date and time function have date and time data. Students, whenever we are just placing these such of any type of data type value in this as a parameter, then function work accordingly. Okay, so now if I am just using a numeric function, then I need to place numeric data here. If I am using a function of string data type, then we must need to insert a string data here. And whenever I am just placing a date and time type of function, then the function strictly require date and time type of value here. Okay, so whenever I am just running this function, it gives, and any function gives a specific type of output. The output type of data is known as their return type. Let I am taking an example showing the return type value. Let same mode function of 11,3. Students, when I am just running this query, like select mode 11,3, then 11 is divided by 3 and gives 3 3s are 9 and 2. The output of this query is 2, and as you know 2 is a numeric value. So have you seen that कि whenever I am just running the mode function, then it takes the numeric data and gives the numeric output. Okay, so if it is working on numeric data, means we can say that their input type is numeric, and whenever I am just here seeing that it is giving a numeric output, then we can say that their return type is also numeric. But bacha, sometimes what happen कि we are just running a function, their input type is different and their output or return type is different. Let I am taking an example in which the function argument type is different and the output means return type is different. Example, in str function. Students, in str functions I am just placing like a b c d e as a string, and now I am just searching bc in it. Okay, so this bc wala, acha, just look at this function. This function is a string function. This function is a string function which work on string data. As you are seeing that in argument I am passing two strings. Okay, and in str function is the function which is used to find the position of second string into the first string. Now if I am saying I am just looking the first string, the bc, that is the part of a string, is here, and if I am just counting the place value of bc, then it is on the second position. Understand? So
the output of this function will be the output of this function is 2. So students, have you seen that in as an argument type I am giving the string data type, but as in result output, as in result I am getting the numeric data. So students, this is the kind of function which is intaking or just working over to the string data type. But whenever we are taking the output or the result, then the return data type means result ka data type is numeric. So students, such a kind of functions we will learn, and it is the most important aspect. You should learn 3 things. First is function name, second is उसका आर्ग्यूमेंट का डेटा टाइप क्या होगा और उसका मतलब आर्ग्यूमेंट को हम किस तरह से इंसर्ट करेंगे, एंड देन उसका रिटर्न टाइप किस डेटा टाइप का होगा. ओके, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, जस्ट बिकॉज ऑफ जब हमें मल्टी फंक्शंस या इनलाइन फंक्शंस एग्जाम में आते हैं तो उस टाइम पे हमें हर पर्टिकुलर फंक्शन का रिटर्न टाइप हमें पता होना चाहिए. और कई बार बच्चों एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन भी आ जाता है कि एक फंक्शन के अंदर ही दूसरा फंक्शन और उसी के अंदर तीसरा फंक्शन जब प्लेस होता है तो वी आर गेटिंग कंफ्यूज्ड कि कौन सा फंक्शन किस पर्टिकुलर टाइप का डेटा टाइप देता है. Okay, so we must need to learn these 3 things. Okay, so in the next video we will just learn to start the function ka first type, that is numeric function. Okay, thank you, have a nice day.